Hello everyone, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 19th of October. The session will be quite interesting and important, students, so stay tuned with us till the end. Students, in this video we are talking about Ministry of Mines. They have unveiled the first SMRI, that is your State Mining Readiness Index, to boost the reforms in the mineral sector. Then UIDI, they have launched SETA to strengthen the India's digital identity. And Indigo, they have partnered with DigiYatra to offer smooth and seamless travel. As well as then we will be talking about Global Pension Index 2025. What is the rank of India and who secured the top position here. So all these things and many more will be discussed here, students. So stay tuned with us till the end. And students, again I need to see maximum likes from all the students watching these videos. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Let's start with national affairs, students. First is Ministry of Mines. They have unveiled the first SMRI, that is your State Mining Readiness Index. What does this mean is that whether the particular state is equipped properly and can handle the process of mining, right? So this is the report that has been released and it is a state level report. Correct. And this index, it is basically designed to promote the reforms in the mining sector and to enhance a more sustainable and eco-friendly mining also if we see, right, this is the first state mining readiness index. Correct. And state level rankings has been released here. Released by whom? Ministry of Mines. And here remember, these ranking has been categorized into three segments, that is category A, category B and category C. If we talk about category A, it is Madhya Pradesh that secured the top position. If we talk about category B, it is Goa, and for category C, it is Punjab that secured the top position. And an incentive of 100 crore rupees each will be provided to these top performing states in each category. Here you can see that. Next is UIDAI. They have launched SETA to strengthen India's digital identity. See, India is already doing a great job in the digital public infrastructure, right? Multiple countries across the world, they want India to help them in order to enhance their digital presence among their country, among their citizens, right? Because being the largest populated country in the world, India has managed this very well. So UIDAI has launched SETA. What is this? SITAA, that is SETA. So it stands for Scheme for Innovation and Technology Association with Aadhaar. Scheme for Innovation and Technology Association with Aadhaar, that is SETA, to foster innovation and collaboration in the digital identity. This initiative, it aligns with the vision of Atmanirbhar Bharat and digital public infrastructure, aiming to develop secure and future-ready identity solutions. Right, this initiative, it will promote collaboration to create scalable, secure and globally competitive solutions in the digital identity. Focus here will be on artificial intelligence, cyber security, drones, that are your UAVs, and also in the satellite sector. Next is Indigo. They have partnered with DigiYatra to offer smooth and seamless travel experience. So Indigo, we know it is one of the India's top airlines, and they have partnered with DigiYatra, a self-sovereign identity ecosystem, to offer passengers to smooth, contactless and hassle-free onboarding experience. Right? Take a note of this. Next is international affairs. Mercer CFA Global Pension Index was recently released. Mercer, what is this? This is an American consulting firm, and they have recently released the Mercer CFA Institute Global Pension Index for 2025. And in this, it is Netherlands that has secured the top position, and our country India stands at 52nd position. Right? If we talk about this index, right, this global pension index, it talks about social security,
right? We all know what is pension. Pension is a certain amount of money that will be given to every individual or the person who worked for that particular organization after the retirement, right? So it is a certain amount of small portion of amount as a retirement benefit. Say for example, even in the government jobs, you get a old pension scheme was to give 50% of the basic pay plus the 50% of DA as the your pension, right? So it is a kind of a security, and it is also liked by many individuals, correct? So here recently this global pension index was released, and it talks about the same, that in a particular country how well equipped that particular ecosystem of that country is to handle the pension for the people there, right? For the citizens there who work for the government or for certain organizations, right? So here you can see it is Netherlands that has secured the top position. Next students, next is WDMMA 2025 ranking were released. What is this WDMMA? This is your World Directory of Modern Military Aircraft. This is an authoritative online resource that annually ranks global air forces, right? It has recently released their 2025 ranking, and as per the ranking, Indian Air Force, right, surpassed China to become the world's third most powerful air force, right? So our country, right, our country's Indian Air Force, it has surpassed China and has become the world's third most powerful air force in the term of overall effectiveness and capability, right? Who secured the top position? It is USA that secures the top position, then it is Russia on second, then India on third, and China on fourth position. Take a note of this, right? Next is India and EU, that is European Union, they have conducted the first joint counter-terrorism training in Haryana. So this first of its kind counter-terrorism training at the National Security Guard campus in Manesar, Gurugram, Haryana. Right, location Manesar, Gurugram, Haryana, and which it is the first one. Next is banking and finance. HSBC collaborated with JustPay to launch a unified payments platform. I repeat, HSBC Holdings Private PLC, right? It is one of the largest banking and financial service organization, and they have partnered with JustPay, right? And they've collaborated here for what? For first of its kind acquiring platform tailored to the needs of the digital first and global merchants. So globally, how the merchants are using the technology here, that is a first of its kind tailor acquiring platform, right? That is digital first. The focus will be on digital. All the forms will be filled there. Interview process will be scheduled on online and everything. Next is awards and recognition. Abu Sufyan Kharkarov has honored with the BRICS International Award. Right? He is the Deputy Prime Minister of the Republic of Dagestan and honored with the BRICS International Award for his contribution to spiritual education, cultural development, and maritime innovation at an event hosted by the State Duma of the Russian Federation in Moscow, Russia. And this event was organized by the Times of Russia Group in collaboration with the BRICS Cultural Media Forum. Next is our appointments and resignation. Gujarat's cabinet reject here Harsh Sanghvi appointed as the Deputy Chief Minister, and Rivaba Jadeja and 20 others sworn in as the ministers here. Take a note of this. Who have been appointed as the Deputy Chief Minister of Gujarat cabinet recently? Harsh Sanghvi, as you can see in the picture here. Correct. Take a note of this. Then who is the Chief Minister here? Chief Minister of Gujarat is Bhupendra Patel ji. Correct. And total ministers that took oath recently, it is 21. Oath is administered by whom? It is administered by the Governor of Gujarat, right? That is Governor Acharya Devrat ji. Moving on. Next is ACC has granted the extension to Ravi A. Robert Gerard as the Chairman and Managing Director of BSNL and MTNL. Right? I repeat, ACC, that is your Appointments Committee of the Cabinet, right? It has given 3 months extension for A. Robert J. Ravi, the Chairman and Managing Director of both BSNL and MTNL. He was set to leave this position on 15th of October 2025, but now it has been extended till 14th of January 2026. Next is science and tech students. Rajnath Singh, as you can see him in the picture, he is a defense minister and has unveiled the Hindustan Aeronautic Limited's first Tejas light combat aircraft Mark 1A in Nasik, Maharashtra. Important students, right? So
Who inaugurated it? Rajnath Singh inaugurated it and unveiled this. It was unveiled what? What was unveiled? It was LCA Mark Tejas Mark 1 fighter jet that was unveiled. And here only the third production line of this fighter jet at the Hindustan Aeronautics Limited was also inaugurated. And it is where? It is in Nasik, Maharashtra. Correct. Also, this facility, it is they have partnered here with Hindustan Aeronautics Limited for 180 such Mark 1 jets by 2032-33. If we talk about Hindustan Aeronautics Limited, who is the chairman and managing director here? Dr. DK Sunil Kumar, headquartered in Bengaluru, Karnataka. Next is sports. India's under 17 women's football team qualifies for the AFC Women's Asian Cup for the first time. I repeat, India's under 17 women's football team, also known as the Young Tigress, right, has qualified for the Asian Football Confederation under 17 Women's Asia Cup 2026. Right, we defeated Uzbekistan by 2-1 in the finals. Right, after which we qualified for the AFC's Women Asian Cup. Next is Jharkhand has unveiled a logo, mascot, anthem for SAFF Senior Championship. Right, so Sudivya Kumar Sonu, the Cabinet Minister for Tourism, Art, Culture, Sports and Youth Affairs of Jharkhand, has unveiled this logo, mascot and anthem, and it is for the 4th edition of the South Asian Athletics Senior Championship, scheduled to be held at Birsa Munda Athletic Stadium in Ranchi, Jharkhand. Right, students? Right, if we talk about the mascot, it is Dalma. Right, let me show. Mascot is Dalma, logo is the land of sports, tribes, culture and nature, and anthem is Zohar. When it is scheduled to be held from 24 to 26th of October in Ranchi, Jharkhand. Next is obituary, students. Recently, Japan's former Prime Minister Tomichi Murayama has recently passed away. Take a note of this. Right, he was well known for his 1995 World War II apology to Asian victims of Japan, also known for the Muraram statement that passed away at the age of 101 in Oita, Japan. Just remember, he was the former Prime Minister of Japan who has recently passed away. Then after this, student, international affairs. International Day for the Eradication of Poverty observed on 17th of October, and it is to foster the understanding and the dialogue between the people living in the poverty and society. There is a theme here, students, theme being ending social and institutional maltreatment by ensuring respect and effective support for the families. Right, it was first observed in 1992. Next is World Trauma Day observed on 17th of October, and this day is observed basically to raise awareness about the physical and emotional trauma that humans have to go through, right? Their impact and the impact of that on the body as well as mental. Correct, this time it was the 15th edition of the World Trauma Day that was observed. There is a theme, students, building a safer future with trauma care is the theme that you need to remember. So that's all for the day, students. Now let's move to the revision part for quite better understanding and learning. Amit Shah, our Home Minister, has recently inaugurated India's largest and modern sports complex named Veer Savarkar Sports Complex at 825 crore rupees in dash, aiming to establish the city as the India's sports capital. So it is located where? That is aimed to be established as India's sports capital. It is Ahmedabad, Gujarat. Right, in Ahmedabad, Gujarat only. Recently, Government of India has bid to host the 2036 Summer Olympic Games, 2036 Summer Olympic Games and 2030 Commonwealth Games. Right, it is, we have bid recently. Right, let's see how that plays out. Next, according to the National Statistics Office monthly bulletin of the periodic labor force survey for August released in September, what was the national unemployment rate for individuals that are aged 15 years and above in August 2025? So what is the unemployment rate here? It is 5.1%. Next, mark the correct statement regarding the recent visit of Prime Minister Narendra Modi to Bihar. If we look at the options, all these three options are important. And remember here, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the interim terminal building at the new civil enclave of Purnia Airport. Next, name the class of precious metals that India will explore in northwest of the Indian Ocean under the agreement signed between Ministry of Earth Science and International Seabed Authority in September 2025. So name the class of precious metals. It is your polymetallic sulfur nodules.
right? And this agreement will be for the next 5 years, where they will be exploring this polymetallic sulfur nodules in the Indian Ocean. Next, in September, DPIIT, Ministry of Commerce and Industry, they commemorated the 3rd anniversary of the National Logistics Policy. This National Logistics Policy, right, it is aligned with the Pradhan Mantri Gati Shakti National Master Plan. And here question asked is, by which year does India aims to become among the top 25 countries in the Logistics Performance Index under the NLP? So it is by 2030. Next, how much funding was announced under the call for proposal schemes to support startups in green hydrogen innovation during the inauguration of the first annual Green Hydrogen Research and Development Conference in September 2025 by Union Minister Prahlad Joshi? So it is 100 crore rupees. Next, identify the international organization with which Government of India has signed a memorandum of understanding to develop international reference classification of occupations in Geneva, Switzerland, with an aim to facilitate youth in availing global employment opportunities. So which is it? It is your International Labour Organization, ILO, right? Next, mark the correct statement regarding the recent visit of Prime Minister Narendra Modi to Madhya Pradesh. So if we look at the option, all these three options are rightly mentioned. Here PM Modi has launched the Swasth Nari Shakht Parivar Abhiyan, and he has also launched the Suman Sakhi chatbot to raise awareness of the maternal and child health in the rural and remote areas. And also he launched the 8th Rashtriya Poshan Month, that is a National Nutrition Month, being held from 17th September to 16th of October. Take a note of this. Moving on, mark the correct statement regarding the official visit of Mauritius Prime Minister to India from 9 to 16th of September. If we look at the options, all these three options are rightly mentioned. Next, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, they partnered with which UN organization in September to strengthen blue port infrastructure in India through the Technical Cooperation Program framework? So, the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, they partnered with which arm of UN? So it was with United Nations. Which arm they partnered here? It is your Food and Agriculture Organization. Next, where did India host the second edition of the BIMSTEC Young Leaders Summit that was held from 9 to 11th of September? So it was where did India host the second edition of BIMSTEC Young Leaders Summit? In Guwahati, Assam. Next, mention the multinational technology company that partnered with Bharat Jan in September to advance Indic language artificial intelligence models in India. So mention the multinational technology company. Which is it? It is IBM, International Business Machines, right? Next, Union Minister Ashwini Vaishnav launched 8 new foundational models under India AI for the upcoming India Artificial Intelligence Impact Summit 2026, the 4th edition of the International AI Symposium. Which of the following is not part of these 8 projects? So it is Infosys AI Lab. It is not a part of the 8 projects under this. That was during the 4th edition of the International AI Symposium that were launched. Avatar AI, IIT Bombay Consortium, Bharat Jan, Fractal Analytics Limited, Tech Mahindra Makers Lab, Gen Loop Intelligence Limited, NeuroDX, Shodh AI, Zentik iTech Innovations, right? These are some that you need to remember, these 8 projects. Next, identify the Indian institute that signed a strategic collaboration in September with Ministry of Statistics and Program Implementation along with Niti Aayog and Bhashini to strengthen the India's capabilities in data, monitoring, evaluation and AI ecosystem. Right? And here you can see that Bhashini has been a part of it. That means multilingual support will be provided here. Correct? So identify that Indian institute. It is your IIT or IM Udaipur. That is Indian Institute of Management of Udaipur signed this collaboration with these organizations. Next, which ministry has partnered with the Department of Empowerment of Persons with Disability in September to launch Integrative Rehabilitation Initiative for Persons with Disabilities? It is Ministry of Ayush. Next, mark the correct statement regarding the recent visit of Prime Minister Narendra Modi to Gujarat on 20th of September. It is option B, that is PM Modi inaugurated the 45 megawatt Badeli solar photovoltaic project and complete solarization of Dhordo village in Kutch, Gujarat. Next, pick the correct statement regarding the initiatives launched by Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal to mark the 10th anniversary of Make in India initiative in September 2025. So if we look at the options, all these 3 options are rightly mentioned. Next,
Which of the following is not among the top 5 Indian states with the highest number of millionaire households in 2025 according to the Mercedes-Benz Huron India Wealth Report and Luxury Consumer Survey released by Huron India in September 2025? It is West Bengal. Next, identify the ministry that signed 5 MOUs with National Institute of Rural Development and Panchayati Raj and 4 state rural livelihood missions in September 2025 to strengthen interventions under Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission. So identify that ministry. It is Ministry of Rural Development. Next, name that Indian institute that signed an MOU with Vietnam National University in September to facilitate collaborative research, academic exchange, and scientific development on the reciprocal basis. So, name that Indian institute. It is your IIT Kanpur. IIT Kanpur. Next, in September, the permanent delegation of India to UNESCO has announced the 7 Indian properties were added under the national natural category in UNESCO's tentative list of the World Heritage Sites. Which of the following is not among these 7 cities? So, among the following, it is your natural heritage of Valley of Flowers in Uttarakhand, right? And this is not one of the 7. Rest 4 are there. Right. Apart from this, Deccan Traps and Panchgani we have seen. Geological heritage we have seen Meghalaya age caves, then Naga Hills, right? Natural heritage of the Era Mati, then natural heritage of the Tirumala Hills, national heritage of the Varkala. These were added here. Next, what is the rank of India in the 18th edition of the Global Innovation Index? Right, released by the World Intellectual Property Organization WIPO in collaboration with the Portulans Institute in September. So what is the rank of India here? India stands at 38th position, right? And Switzerland, they secured the first position. Next, where did the 9th edition of the exercise Pacific Reach take place in September, which was also joined by the Indian naval ship Nistar? So it was held where? It was held in Singapore, right? And take a note of this from Indian side, which Indian naval ship took part here. It is Indian naval ship Nistar that took part, and this is the 9th edition of the exercise between India and Singapore, or Indian Navy and Singapore Navy. Next, pick the country that was re-elected in September to the Council of Administrations and the Postal Operation Council of Universal Postal Union for a period of 4 years starting from 2025 till 2028. It is our India. Next, mark the correct statement regarding the recent visit of the Union Minister Piyush Goyal to UAE in September 2025. All these 3 options are rightly mentioned here. Next is name the country that was elected as the member of Interpol Asian Committee for the term 2025 to 2029 during the 25th Asian Regional Conference held at the Interpol Global Complex for Innovation, Singapore in September 2025. So name that country. It is our country, India. Right, and India was represented by a delegation from the CBI, Central Bureau of Investigation. Next, the biological diversity of the areas beyond national jurisdiction agreement, that is BBNJ agreement, under the United Nations Convention on the Law of the Sea, which secured 60 ratifications in September 2025, will come into force in when? It will be coming into force from January 2026 onwards. Next, in September, as per the RBI's regulation of the payment aggregators direction, non-bank payment aggregators applying for the authorization must have a minimum net worth of how much? They must have a minimum net worth of 15 crore rupees at the time of application. Next, in September, RBI set up an independent advisory group on regulations to strengthen stakeholders' engagement. Here, this AGR advisory group on regulations will be chaired by whom? It will be chaired by Rana Ashutosh Kumar Singh. Next, mention the initiative of IRDAI, which is unveiled, of which it unveiled a website, right, marking a key step in developing India's digital public infrastructure for the insurance sector. It is Bima Sugam. Next, identify the company with which AU Small Finance Bank they collaborated to launch the AU Cosmo credit card built on the RuPay network to cater the growing preference of UPI payments in India. So it is Kiwi. This is the company with which AU Small Finance Bank collaborated. Next, choose the correct statement regarding multiple scheme framework announced by the PFRDA in September 2025. If we look at the options, all these 3 options are rightly mentioned.
Next, mention the company that signed a memorandum of understanding with Hindustan Copper Limited to collaborate on exploration and development of critical and strategic minerals such as your copper and associated minerals. So mention that company, it is Oil India Limited, OIL. Next, who will be conferred with the Dadasaheb Phalke Award for the year 2023 as announced by the Ministry of Information and Broadcasting? So, who will be conferred here? Mohanlal Vishwanath Nair, right? He will be conferred here and he will be the 55th recipient of the Dadasaheb Phalke Award for his exceptional contribution. Next, and this Dadasaheb Phalke Award, remember students, it is the highest honor of the Indian cinema. Next, mention the state that received the Best State Award under Mera Resham Mera Abhiyan program, that is a flagship initiative of the Central Silk Board, an autonomous body which works under the Ministry of Textiles. Right? So, mention that state that received this Best State Award. It is Andhra Pradesh. Next, identify the organization for which Appointments Committee of the Cabinet appointed Praveen Kumar as the Director General in September 2025. So, ITBP, Indo-Tibetan Border Force, for this organization, ACC has appointed Praveen Kumar as the new Director General. Correct? Take a note of this. And here remember, for CISF is if asked about CISF, Central Industrial Security Force. For CISF, who has been appointed as the director here? Praveer Ranjan. Right, take both of them. Both appointment are important. Next, identify the company which built the DSC A22, the third ship of the 5-ship diving support craft project launched by the Indian Navy in September at Titagarh, Kolkata. So, identify that company which we are talking about. It is your Titagarh Rail Systems Limited. Next, pick out the correct statement regarding the winners of the FIDE Grand Swiss 2025 held at Samarkand, Uzbekistan in September 2025. If we look at the options, all these three of them are rightly mentioned. Next, which country defeated India in the final to win the 11th edition of the Women's Hockey Asia Cup held in the Guangzhou, China in September 2025? So, which country defeated India? It was defeated by China. Next, in September, who became the first Indian high jumper to qualify for the men's high jump final at the 20th edition of the World Athletics Championship held in Tokyo, Japan? So, Sarvesh Kushare became the first Indian high jumper to qualify for the men's high jump at the 20th edition of the World Athletics Championship to be held in Tokyo, Japan. He cleared a 2.25 meter jump in the men's high jump qualification round. Next is our homework section. First question is, tell me recently Indian Navy and Greek Navy, they recently conducted a PASEX exercise. Where was this conducted? Tell me the location. Second question, who won the British Grand Prix? Third question, Operation Shiva. Why was this Operation Shiva held? What was the reason behind it? Fourth question, tell me recently India has won how many medals at the World Police and Fire Games for 2025. Then fifth question, recently who has been who became the 87th Grandmaster of India? 87th Grandmaster of India. And sixth question, students, tell me which state has won the under 18s junior national rugby. So these are your 6 homework questions and I need to see maximum participation from all the students. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 19 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा पहला SMRI जो कि है स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स को रिलीज़ किया, ताकि माइनिंग सेक्टर में जो हमारा एक रिफॉर्म है वो आ सके मिनरल सेक्टर में, माइनिंग सेक्टर में।
देन UIDAI के द्वारा सीता लॉन्च किया गया, ये एक डिजिटल आइडेंटिटी को इंडिया की बढ़ाने के लिए इनिशिएटिव है। देन इंडिगो ने भी पार्टनर किया डिजी यात्रा के साथ ताकि जो ट्रैवल है वो सीमलेस हो सके। देन मोर्सर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स रिलीज़ किया गया जहाँ पे नेदरलैंड ने टॉप किया, एंड इंडिया की क्या रैंक रही वो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर से। अभी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा अनवेल किया गया पहला SMRI टू बूस्ट द रिफॉर्म्स इन द मिनरल सेक्टर। SMRI क्या है? स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स, राइट, एज वेल एज यहाँ पे इसी के साथ साथ स्टेट लेवल रैंकिंग्स भी रिलीज यहाँ पे की गई। ये सेक्टर ये एक बेसिकली बताता है कि जो माइनिंग सेक्टर है हमारा, राइट, वो कितना बेटर परफॉर्म कर रहा है, क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम अचीव कर रहे हैं, क्या टारगेट्स हमारे द्वारा अचीव किए जा रहे हैं, कितना हमारा आउटपुट निकल रहा है, किस स्टेट में से कौन सा मिनरल ज़्यादा निकल रहा है, राइट, एंड कौन से स्टेट में माइनिंग करना बेटर है, वहाँ पे ज़्यादा हमारा आउटपुट निकलता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये यहाँ पे रिलीज़ किया गया, राइट, एंड यहीं पे आप देख सकते हैं 3 कैटेगरीज में इसको बांटा गया है। ए कैटेगरी में मध्य प्रदेश की रैंक 1, बी में गोवा की, सी में पंजाब की, एंड यहीं पे इन रैंक के साथ जिन्होंने टॉप किया, जो फर्स्ट रैंकर्स हैं, राइट, यहाँ पे 100 करोड़ रुपए उनको ईच प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर बीइंग द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट। इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आएगा कि किसके द्वारा ये रिलीज़ किया गया, फर्स्ट एडिशन, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया। फिर आ जाते हैं UIDAI, इन्होंने लॉन्च किया सीता टू स्ट्रेंथन इंडियाज़ डिजिटल आइडेंटिटी, इंडिया के डिजिटल आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए। एंड हम जानते हैं कि इंडिया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में तो वैसे ही लीड कर रहे हैं हम, राइट, इंडिया की लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, लेकिन फिर भी हम इतने इजीली से पूरी पॉपुलेशन को मैनेज कर पा रहे हैं। तो ये वर्ल्ड स्केल पर अगर हम वर्ल्ड में देखें तो इंडिया को बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है इस इनिशिएटिव के लिए, एंड बहुत सारी कंट्रीज़ इंडिया को बोलती हैं, इंडिया की हेल्प को मांगती हैं कि आप हमें आइए और हमारे DPI को बेटर कीजिए, राइट। तो यहाँ पे सीता लॉन्च किया गया। सीता है स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार, जिससे इनोवेशन बढ़ेगी एंड कोलैबोरेशन बढ़ेगी इन डिजिटल आइडेंटिटी। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, अभी इंडिगो ने पार्टनर किया डिजी यात्रा के साथ ताकि जो ट्रैवल है उसको सीमलेस बनाया जा सके, एक्सपीरियंस को और बेटर किया जा सके। इसके बाद आ जाते हैं फिर इंटरनेशनल अफेयर्स पे। मर्सर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स अभी रिलीज़ हुआ 2025 का, आज नीदरलैंड ने यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन सिक्योर कर लिया है। वहीं पे अगर हम अपने कंट्री इंडिया की बात करें तो इंडिया आ जाता है यहाँ पर 52nd पोजीशन पे, राइट। एंड पेंशन क्या होता है, जब आप रिटायरमेंट होते हैं उसके बाद एक स्टेड इनकम आना, राइट, कम इनकम होती है वो आपकी नॉर्मल इनकम से, बट आपकी स्टेड इनकम होती है तो वो पेंशन होती है, करेक्ट। तो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स यहाँ पे रिलीज़ किया गया था, कौन सी कंट्री बेटर परफॉर्म करती है, राइट, कहाँ पे ज़्यादा बेटर आपको पेंशन देखने को मिलती है, करेक्ट। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे रिलीज़ किया गया। एंड अभी अगर हम देखें तो जैसे 3 कैटेगरीज में भी है यहाँ पे, ग्रेड A, B+, B, राइट, C+। तो ऐसी देखें तो पहली एशियन कंट्री जिनको भी ग्रेड A रैंकिंग मिली वो भी याद रख सकते हैं, वो यहाँ पे रहेगी सिंगापुर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, फिर एक और चीज़, ये 17वां एडिशन था इसका 2025 में जो रिलीज़ किया गया। नेक्स्ट WDMMA, ये 2025 की रैंकिंग अभी रिलीज़ की गई। WDMMA ये है क्या, ये है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। 2025 की रैंकिंग यहाँ पे रिलीज़ की गई, एंड इंडियन एयरफोर्स ने सरपास किया चाइना को टू बिकम द वर्ल्ड्स 3rd मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स, राइट। तो मतलब टॉप पर है USA, फिर रशिया आ जाता है, फिर हमारा इंडिया है अब ओवरऑल कैटेगरी में अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें, एंड देन 4th पोजीशन पे आ जाता है चाइना, करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, इंडिया एंड EU कंडक्ट फर्स्ट जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज हरियाणा में। कहाँ पर हुई ये काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज? मानेसर कैंपस में हुई, एट द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कैंपस इन मानेसर, गुरुग्राम हरियाणा में ये एक्सरसाइज हमें देखने को मिली। इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस पे। HSBC ने कोलैबोरेट किया जस्ट पे के साथ ताकि यूनिफाइड पेमेंट्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जा सके, राइट, जो कि डिजिटल फर्स्ट एंड ग्लोबल मर्चेंट्स है, राइट, उनकी जो नीड्स हैं उनको यहाँ पे पूरा करने के लिए, उनके हिसाब से सिस्टम्स बनाने के लिए, पेमेंट्स बनाने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स फिर अवार्ड्स एंड रिकग्निशन पे। अबू स्यूपन एंड खरखरोव, आई रिपीट, अबू स्यूपन एंड खरखरोव, इनको सम्मानित किया गया ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड से, राइट। ये अवार्ड कहाँ दिया गया था? मॉस्को रशिया में दिया गया, करेक्ट। एंड ये अवार्ड दिया गया बेसिकली इनका जो स्पिरिचुअल एजुकेशन है, कल्चरल डेवलपमेंट है, मैरीटाइम इनोवेशन है, राइट, उससे जो यहाँ पे ग्रोथ होती हुई देखी है ब्रिक्स नेशंस में, उसको सम्मानित करने के लिए यहाँ पे इनको सम्मानित किया गया ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड से। इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पे। गुजरात कैबिनेट में कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे हर्ष सांघवी ये अपॉइंट किए गए हैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर,
रिवावा जडेजा एंड 24 अदर्स sworn in as the ministers here. राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस. एक और चीज़, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे गुजरात के? वो है भूपेंद्र पटेल. राइट, वो कौन है? यहाँ के गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं. राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट. एसीसी ने एक्सटेंड किया एक्सटेंशन टू रवि ए रॉबर्ट जेराट. इनको चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे हैं ये बीएसएनएल एंड एमटीएनएल के. एंड इनको 2 महीने का यहाँ पे 3 महीने का यहाँ पे एक्सटेंशन देखने को मिलेगा. 14 जनवरी 2026 तक ये एक्सटेंशन रहेगा. इसके बाद आ जाते हैं साइंस एंड टेक पे. राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एक प्रोडक्शन फैसिलिटी भी यहाँ पे अनवेल की गई है. ये कहाँ पे रहेगी? नासिक, महाराष्ट्र में, जहाँ पे 180 तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट मार्क 1A फाइटर जेट्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा 2032-2033 तक. राइट, एक और चीज़ क्वेश्चन आ सकता है कि हॉल कौन से यहाँ पे एयरक्राफ्ट बना रहा है? तो तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट मार्क 1A यहाँ पे बना रहा है. इसके बाद आ जाते हैं स्पोर्ट्स पर. इंडियाज़ अंडर-17 वीमेंस फुटबॉल टीम इन्होंने क्वालिफाई कर दिया है AFC वीमेंस एशिया कप के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम. ऐसा हुआ है. एंड हमने अभी उज्बेकिस्तान को 2-1 से फाइनल में हराया, तब हमने ये टारगेट, ये हमारी अचीवमेंट सामने आई. इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स फिर झारखंड. इन्होंने अनवेल किया लोगो मैस्कॉट एंथम फॉर SAF सीनियर चैंपियनशिप. यहीं पे अगर देखें कहाँ पर हुई, ये बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम में रांची झारखंड में देखने को मिली. अगर बात करें ये 4th एडिशन रहेगा. कहाँ पर? रांची झारखंड में. मैस्कॉट क्या रहेगा? डेल्मा. लोगो क्या है? द लैंड ऑफ स्पोर्ट्स, ट्राइब्स, कल्चर एंड नेचर. एंथम क्या रहेगा? जोहर. एंड ये इवेंट 24 से 26 अक्टूबर तक था. कहाँ पर? रांची झारखंड में. इसके बाद आ जाते हैं ऑबिटरी के ऊपर स्टूडेंट्स. जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर तोमिची मुरायामा, इनका रिसेंटली निधन हो गया. राइट, एंड अगर हम इनकी बात करें, ये अपनी 1995 वर्ल्ड वॉर 2 की जो अपोलॉजी है टू एशियन विक्टिम्स, उसके लिए जाना जाते हैं, जिसको मुरायामा स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है. इसके बाद आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पे. इंटरनेशनल डे फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 17 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है. पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए एंड जो लोग पॉवर्टी में रहते हैं उनको बेटर लाइफ प्रोवाइड कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है. इसकी थीम रहेगी एंडिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल माल ट्रीटमेंट बाय एंश्योरिंग रिस्पेक्ट एंड इफेक्टिव सपोर्ट फॉर द फैमिलीज. 1992 में इसको ऑब्जर्व किया गया इन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, बेसिकली UN के द्वारा. इसके बाद आ जाते हैं वर्ल्ड ट्रॉमा डे. 17 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं. ट्रॉमा के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए कि ट्रॉमा आपका फिजिकल भी हो सकता है एंड मेंटल भी हो सकता है. एंड जो लोग इससे जूझ रहे हैं उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है. इस बार हमने इसका 15वां एडिशन ऑब्जर्व किया. एंड थीम रहेगी बिल्डिंग अ सेफर फ्यूचर विद ट्रॉमा केयर. तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे, जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रांग होगी. अभी यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया इंडिया का लार्जेस्ट एंड मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिसका नाम है वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. 825 करोड़ की लागत से बनेगा. कहाँ पर? अहमदाबाद, गुजरात में. एंड इसी को हम एक सिटी एज द स्पोर्ट्स सिटी या फिर इंडिया की स्पोर्ट्स कैपिटल बनाने की बात कर रहे हैं. हम देखेंगे कि 2030 के जो अभी हमें गेम्स देखने को मिलेंगे एंड 2036 के 2 गेम्स के लिए यहाँ पे बिड किया गया है. क्या आप 2 मिनट लेके सोच सकते हैं कि कहाँ पे ये गेम्स होंगे और कौन से गेम्स के लिए यहाँ पे बिड किया गया है इंडिया के द्वारा? टेक अ टाइम. राइट, तो अगर हम यहाँ पे हम देखें स्टूडेंट्स, तो वीडियो को पॉज कर दो एंड थिंक अबाउट द आंसर. राइट, लेट्स स्टार्ट. तो कहाँ पे 2036 के गेम्स होंगे? ये होंगे समर ओलंपिक गेम्स. एंड 2030 के जो गेम्स हैं ये है कॉमनवेल्थ गेम्स. इन दोनों के लिए बिड किया गया है इंडिया के द्वारा. एंड दोनों कहाँ पर? अहमदाबाद, गुजरात में होते हुए दिखेंगे. बिड किया गया है, अभी फाइनल नहीं है. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस मंथली बुलेटिन ऑफ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे अगस्त के महीने का, जो कि रिलीज किया गया सितंबर में, व्हाट वाज द नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर इंडिविजुअल्स दैट आर एज्ड 15 ईयर्स एंड अबव इन अगस्त 2025? तो वो है 5.1% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिला. फिर आ जाते हैं करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द रीसेंट विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू बिहार ऑन 15 सितंबर 2025. ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन सही रहेंगे. इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखेंगे, यहाँ पे अभी इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया इंटर्म टर्मिनल बिल्डिंग एट द न्यू सिविल एनक्लेव ऑफ द पूर्णिया एयरपोर्ट. Next, name the class of the precious metal that India will explore in the northwest of the Indian Ocean under the agreement signed between Ministry of Earth Science and International Seabed Authority सितंबर के महीने में. तो कौन से मिनरल्स यहाँ पे मिले, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये एग्रीमेंट 5 साल का रहेगा, जहाँ पे पॉलीमेटेलिक सल्फर नोड्यूल्स को एक्सप्लोर करने का काम किया जाएगा इंडियन ओशन में. नेक्स्ट, सितंबर के महीने में DPIIT एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन्होंने कमेमोरेट की 3rd एनिवर्सरी ऑफ द नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी. बाय विच ईयर डज इंडिया एम टू बी अमंग द टॉप 25 कंट्रीज इन द लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स अंडर द नेशनल लॉजिस्टिक्स प्रोग्राम?
तो यहाँ पर नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी बाय विच ईयर, तो कौन से साल तक, 2030 तक का इंडिया का टारगेट है। नेक्स्ट, हाउ मच फंडिंग वॉज अनाउंस्ड बाय द कॉल फॉर प्रपोजल स्कीम्स टू सपोर्ट द स्टार्टअप जो कि ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। एंड ये था ड्यूरिंग द फर्स्ट एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस के दौरान, जो कि सितंबर में हुई थी। यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। तो कितनी फंडिंग यहाँ पे एक्सपेक्ट की जा रही है, 100 करोड़ रुपीज तक की फंडिंग एक्सपेक्ट की जा रही है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक एमओयू साइन किया ताकि इंटरनेशनल रेफरेंस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन के ऊपर काम किया जा सके इन जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिसका एम रहेगा कि हम यूथ को फैसिलिटेट कर सकें इन अवेलिंग ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। उनकी स्किल्स के हिसाब से मल्टीपल कंट्रीज में जो जॉब्स अवेलेबल हैं उनको के लिए वो एलिजिबल हो सके, ये इनिशिएटिव रहेगा, राइट, कि वो अलग जगह के अपने स्किल्स को डोमिनेट कर सकें, अपने स्किल्स के अनुसार उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती रहे। तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, राइट, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ये एमओयू साइन किया। Next, mark the correct statement regarding the recent visit of Prime Minister नरेंद्र मोदी to मध्य प्रदेश in September। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान लॉन्च किया, देन सुमन सखी चैटबॉट लॉन्च किया यहाँ पर, एंड 8वां राष्ट्रीय पोषण माह यहाँ पे लॉन्च किया। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द रीसेंट विजिट ऑफ मॉरिशस प्राइम मिनिस्टर टू इंडिया। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी आपके तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इन्होंने अभी पार्टनर किया विद विच यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ सितंबर के महीने में, ताकि ब्लू पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जा सके इंडिया में थ्रू टेक्निकल कॉपरेशन प्रोग्राम फ्रेमवर्क, राइट। तो इन्होंने किच यूएन के आर्म के साथ पार्टनर किया, यूनाइटेड नेशन के आर्म फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनका यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिला। नेक्स्ट, वेयर डिड इंडिया ने होस्ट किया, कहां पर, सेकेंड एडिशन ऑफ द बिम्स्टेक यंग लीडर्स समिट 2025 की 9 से 11 सितंबर तक। तो कहां पे इंडिया ने होस्ट किया ये सेकेंड एडिशन, तो ये होस्ट किया गया गुवाहाटी, असम में। नेक्स्ट, उस मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने पार्टनर किया भारत जैन के साथ इन सितंबर टू एडवांस इंडिक लैंग्वेज एआई मॉडल्स को इन इंडिया। तो वो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स IBM। नेक्स्ट आ जाते हैं, सितंबर के महीने में यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इन्होंने लॉन्च किए 8 नए फाउंडेशनल मॉडल्स अंडर इंडिया AI फॉर द अपकमिंग इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट 2026 की द 4th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल AI सिंपोजियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ दीज 8 प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे इन्फोसिस AI लैब इसका पार्ट नहीं है, बाकी सब इसका पार्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो उस इंडियन इंस्टीट्यूट को जिन्होंने साइन किया एक स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन सितंबर के महीने में विद मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन अलॉन्ग विद नीति आयोग एंड भाषिनी। भाषिनी क्या है, ये मल्टीलिंगुअल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा यहाँ पे, करेक्ट, ताकि इंडिया में जो डाटा मॉनिटरिंग इवेल्युएशन AI की इकोसिस्टम है उसके ऊपर काम किया जा सके बढ़ चढ़ कर। तो IIM उदयपुर के द्वारा ये अग्रीमेंट हमें देखने को मिला इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने पार्टनर किया डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के साथ सितंबर के महीने में टू लॉन्च इंटीग्रेटिव रिहेबिलिटेशन इनिशिएटिव्स फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तुम बात करो, बताओ कौन सी मिनिस्ट्री रहेगी, वो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको, रिसेंट विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू गुजरात। तो यहाँ पे देखें तो सिर्फ ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग इनिशिएटिव्स लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी टू मार्क 10th एनिवर्सरी ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इन सितंबर। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द टॉप 5 इंडियन सिटीज या इंडियन स्टेट्स विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ मिलेनियर्स हाउस होल्ड इन 2025 अकॉर्डिंग टू मर्सिडीज बेंज ह्यूरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट एंड लग्जरी कंज्यूमर सर्वे जो कि ह्यूरन इंडिया के द्वारा रिलीज की गई। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द टॉप 5 में नहीं आती, वो वेस्ट बंगाल नहीं आती। टॉप पर है महाराष्ट्र, देन दिल्ली, देन तमिलनाडु, देन कर्नाटका एंड देन गुजरात। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मिनिस्ट्री जिन्होंने साइन किए 5 MOUs विद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज एंड 4 स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन इन सितंबर ताकि स्ट्रेंथन किया जा सके इंटरवेंशंस अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो कौन सी मिनिस्ट्री रहेगी, वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, नेम दैट इंडियन इंस्टीट्यूट जिन्होंने MOU साइन किया वियतनाम नेशनल यूनिवर्सिटी के साथ सितंबर के महीने में टू फैसिलिटेट कोलैबोरेटिव रिसर्च एकेडमिक एक्सचेंज एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑन द रेसिप्रोकल बेसिस। तो नेम दैट इंडियन इंस्टीट्यूट वो है IIT कानपुर।
नेक्स्ट सितंबर के महीने में द परमानेंट डेलीगेशन ऑफ इंडिया टू यूनेस्को, इन्होंने अनाउंस किया दैट 7 इंडियन प्रॉपर्टीज वर एडेड अंडर द नेचुरल कैटेगरी इन यूनेस्कोज टेंटेटिव लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग दी 7 साइट्स। तो इनमें से अगर हम देखें तो नेचुरल हेरिटेज ऑफ वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड इस 7 साइट्स में इंक्लूडेड नहीं है। अब जो टोटल नंबर ऑफ इंडियन साइट्स है यूनेस्को की लिस्ट में वो 69 है, 69 है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 18th एडिशन ऑफ द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो इंडिया 38th पोजीशन पर आता है। वीपो के द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज किया गया एंड स्विट्जरलैंड ने यहाँ पे सिक्योर करी फॉर द फर्स्ट पोजीशन। नेक्स्ट, वेयर डिड द 9th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज पैसिफिक रीच, यहाँ पे हुई एंड यहाँ पे इंडियन नेवल शिप निस्तार का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये एक्सरसाइज कहाँ पर हुई थी, सिंगापुर में हुई थी। 9th एडिशन है, इंडियन नेवी एंड रॉयल नेवी ऑफ सिंगापुर के बीच में ये एक्सरसाइज हुई और इंडिया की तरफ से INS निस्तार का पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला। नेक्स्ट, पिक द कंट्री जिसको रिलेक्ट किया गया इन सितंबर टू द काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स 2025 से 2028 के लिए। तो वो है हमारी कंट्री इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द रिसेंट विजिट ऑफ यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल टू UAE। तो यहाँ पे हम देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस कंट्री का नाम बताओ दैट वाज रीइलेक्टेड और दैट वाज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ इंटरपोल एशियन कमेटी फॉर टर्म 2025 से 29 के लिए ड्यूरिंग 25वीं एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस जो कि इंटरपोल ग्लोबल कॉम्प्लेक्स में हुई थी फॉर इनोवेशन जो कि सिंगापुर में है। राइट, तो हमारी इंडिया को यहाँ पे रिलेक्ट कर लिया गया है इंटरपोल एशियन कमेटी में एज अ मेंबर। नेक्स्ट, the biological diversity of areas beyond national jurisdiction that is BBNJ agreement, right, and यहाँ पे basically secure किए 60 ratifications in September that will come into force। कब से लागू हो जाएंगे ये, तो जनवरी 2026 से 1 जनवरी 2026 से ये लागू होते हुए दिखेंगे। नेक्स्ट, in September, as per RBI's regulation of the payment aggregators directions 2025, non-bank payment aggregators applying for authorization they must have a minimum net worth कितनी 15 करोड़ की मिनिमम नेट वर्थ होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। नेक्स्ट, RBI ने सेटअप किया एक इंडिपेंडेंट एडवाइजरी ग्रुप ऑन रेगुलेशंस टू स्ट्रेंथन स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। यहाँ पे ये जो AGR है इसको चेयर किया जाएगा किसके द्वारा, इट विल बी चेयर्ड बाय राणा आशुतोष कुमार सिंह। Next, mention the initiative of IRDAI of which it unveiled a website in September, marking a key step in developing India's digital public infrastructure for the insurance sector। तो ये है बीमा सुगा। Next, identify the company जिन्होंने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ कोलैबोरेट किया एंड लॉन्च किया AU कॉस्मो क्रेडिट कार्ड जो बिल्ड किया गया है रुपे नेटवर्क पे टू कैटर द ग्रोइंग प्रेफरेंस ऑफ UPI पेमेंट्स इन इंडिया। तो वो है कीवी। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क जो कि अनाउंस किया गया PFRDA के द्वारा। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस में देखें तो तीनों ऑप्शंस आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। राइट, तीनों ऑप्शन सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने एक MOU साइन किया हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के साथ टू कोलैबोरेट ऑन द एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स जैसे कॉपर एंड एसोसिएटेड मिनरल्स। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, यह है ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL। Next, who will be conferred with the Dada Saheb Phalke Award for the year 2023 as announced by the Ministry of Information and Broadcasting in September। तो ये है मोहनलाल विश्वनाथ नेर। राइट, एंड ये 55वें रेसिपिएंट बने हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड के जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिनेमा ऑनर है एंड 2023 के लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, मेंशन द स्टेट दैट रिसीव द बेस्ट स्टेट अवार्ड अंडर मेरा रेशम मेरा अभियान प्रोग्राम जो कि एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है सेंट्रल सिल्क बोर्ड का जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर आती है। तो कौन सी स्टेट इन्होंने रिसीव किया बेस्ट स्टेट अवार्ड, ये है आंध्र प्रदेश। मूविंग ऑन, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच एशियन अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट इन्होंने अपॉइंट किया प्रवीण कुमार को एज देयर डायरेक्टर जनरल इन सितंबर। तो वो है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP के जो अभी रिसेंटली डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं प्रवीण कुमार रहेंगे। एंड CISF की अगर मैं बात करूं तो इनके डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट किए गए हैं CISF के, वो हैं प्रवीर रंजन। राइट, ये डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं CISF के। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द कंपनी विच बिल्ट द DSC A22 द थर्ड शिप ऑफ द 5 शिप डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया इंडियन नेवी के द्वारा सितंबर के महीने में एट टीटागढ़ कोलकाता। तो ये है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड। नेक्स्ट है
करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द विनर्स ऑफ द फाइट ग्रैंड स्विस 2025 जो कि समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें तो तीनों ऑप्शंस आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट, किस कंट्री ने डिफीट किया इंडिया को इन द फाइनल टू विन द 11th वीमेंस हॉकी एशिया कप हेल्ड इन हांगजो चाइना इन सितंबर 2025। तो चाइना ने इंडिया को डिफीट करा एंड चाइना की ये 3rd एशिया कप टाइटल विक्ट्री रहेगी। नेक्स्ट, सितंबर के महीने में हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन हाई जंपर टू क्वालिफाई फॉर द मेंस हाई जंप फाइनल एट द 20th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि टोक्यो जापान में हुई। एंड इनका जो हाई जंप था 2.25 मीटर का ये हाई जंप था 20वें एडिशन के दौरान ऑफ द वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, राइट। यहाँ पे इन्होंने क्वालिफाई किया। ये है सर्वेश कुशारे। कौन रहेंगे? सर्वेश कुशारे। नेक्स्ट, किस कंपनी ने ऑफिशियली नेम किया गया एज द न्यू जर्सी स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम्स का? तो अपोलो टायर्स यहाँ पे नए स्पॉन्सर बन गए हैं, 2027 तक ये रहेंगे। एंड इनसे पहले कौन था? वो थे ड्रीम 11। वो कंपनी अब बंद हो गई है, राइट। उन्होंने ऑपरेशंस बंद कर दिए। रीजन बीइंग जो इंडिया का ई बिल आया था, राइट, गेमिंग बिल के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस इंडिया ने लगाई हैं उसके तहत ये बंद होती हुई दिखी। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस टीम ने डिफीट किया साउथ जोन को टू विन द 62nd एडिशन ऑफ द दुलीप ट्रॉफी 25-26 इन द फाइनल हेल्ड एट द बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु कर्नाटका? तो सेंट्रल जोन के द्वारा यहाँ पे जीता गया है, राइट। एंड सेंट्रल जोन ने किन को हराया? साउथ जोन को फाइनल में हराया। ये इनका 62nd एडिशन था एंड सेंट्रल जोन के द्वारा ये 7वां टाइम है, मतलब 7 टाइम इन्होंने इस ट्रॉफी को यहाँ पे जीता है, दुलीप ट्रॉफी को। नेक्स्ट, हु इज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द आर्चरी प्रीमियर लीग जो कि अभी अक्टूबर में होगी? तो रामचरण जो कि काफ़ी फेमस एक्टर हैं, इनको अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आर्चरी प्रीमियर लीग। 2 से लेकर 12 अक्टूबर तक ये हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 73rd एडिशन ऑफ द इनलाइन स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि वर्ल्ड स्केट के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया चाइना में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन सही रहेंगे? तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज दे डिड नॉट कम इन द टॉप ऑफ द मेडल टैली ऑफ द 20वां एडिशन ऑफ द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि टोक्यो जापान में हुई? तो यहाँ पे अगर हम देखें जो इस मेडल टैली में टॉप पे नहीं है, टॉप 5 में इजराइल नहीं है, टॉप पे थे यूएसए, फिर कीनिया, कीनिया के बाद 3rd पोजीशन पे कनाडा, देन नेदरलैंड एंड देन बोस्टवाना। ठीक है। नेक्स्ट, मैक्स वर्स्टैपेन रिप्रेजेंटेड, ये किस टीम को रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये रेडबुल को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्होंने 8वां एडिशन ऑफ अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया जो कि बाकू अजरबैजान में हुआ था। नेक्स्ट आ जाते हैं, हर साल नेशनल इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है इन इंडिया टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वर्या जो रिमेंबर किए जाते हैं इंडिया के पहले इंजीनियर, राइट। तो कब ऑब्जर्व करते हैं नेशनल इंजीनियर्स डे? 15 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, थीम बताओ इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर की। ओजोन लेयर को O3 से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड तो थीम क्या रहेगी? फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, यहाँ पे इसकी ये थीम रहेगी। नेक्स्ट इज आवर होमवर्क सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, टेल मी रिसेंटली Indian Navy and Greek Navy they recently conducted a PASEX exercise. Where was this conducted? Tell me the location. Second question, who won the British Grand Prix? Third question, Operation Shiva. Why was this Operation Shiva held? What was the reason behind it? Fourth question, tell me recently India has won how many medals at the World Police and Fire Games for 2025? Then fifth question, recently who has been who became the 87th Grandmaster of India? 87th Grandmaster of India. And sixth question, students, tell me which state has won the under 18s junior national rugby? So these are your 6 homework questions and I need to see maximum participation from all the students.